Today we will be discussing Meson theory of nuclear force. पिछली क्लासेज में हमने न्यूक्लियर फोर्स के बारे में डिस्कस किया था कि ये न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं। न्यूक्लियर फोर्स एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो सभी न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करता है एंड न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स ओनली विद इन द रेंज ऑफ न्यूक्लियस। हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जाना था, जैसे अट्रैक्टिव फोर्स, दिस इज अट्रैक्टिव फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स, स्पिन डिपेंडेंस, चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज सिमेट्री, saturation properties. All these we had already discussed in our last classes. Now we will take Meson theory of nuclear force. This theory was proposed by a scientist Yukawa. According to this theory, each nucleon continuously emits and simultaneously absorbs पायोन पार्टिकल्स। यानी इस थ्योरी के अनुसार प्रत्येक न्यूक्लियन है, प्रत्येक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, वो कंटिन्यूसली इमिट और साइमल्टेनियसली एब्जॉर्ब करता है पायोन पार्टिकल्स को। पायोन पार्टिकल्स तीन प्रकार के होते हैं: पाई प्लस पार्टिकल, पाई माइनस पार्टिकल एंड न्यूट्रल पायोन्स, पाई जीरो पायोन्स। पायोन पार्टिकल का ही दूसरा नाम पाई मेसोन है। इफ ए न्यूक्लियन एग्जिस्ट नियर अनदर न्यूक्लियन, देन पायोन इमिटेड बाय ए न्यूक्लियन मे बी एब्जॉर्ब्ड बाय अनदर नियरेस्ट न्यूक्लियन। यानी किसी एक न्यूक्लियन के पास में दूसरा न्यूक्लियन हो, यानी एक प्रोटॉन के पास में दूसरा न्यूट्रॉन हो, तो एक प्रोटॉन के द्वारा इमिटेड कोई पायोन किसी दूसरे नियरेस्ट नेबर न्यूक्लियन के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा सकता है इस थ्योरी के अनुसार। इन दिस प्रोसेस द मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड एंड दिस मोमेंटम केज न्यूक्लियर फोर्स। यानी इस मोमेंटम जो ट्रांसफ़र होता है एब्जॉर्ब करने में, उसके कारण ही न्यूक्लियर फोर्स जनरेट होता है। सो दिस इज द एक्सचेंज ऑफ पायोन्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स which is responsible for the generation of nuclear force. This is the slide which I have told you. Now this is already told. Next slide is this one. There are three ways of exchange of pions. यानी तीन तरीके हैं जिसमें पायोन्स का एक्सचेंज हो सकता है। When a proton emits a pi plus, first of this one is when a proton emits a pi plus pion and it converts into neutron. If there is another neutron near to this proton, then this emitted pi plus pion can be absorbed by this neutron and it converts into proton. This is the first case. Similarly, second case, if a neutron emits a pi minus meson and converts into proton, if there is another proton near to this neutron, then this emitted pi minus meson can be absorbed by this nearest proton and this proton ultimately converts into neutron. This is the second case. Third case is exchange of pi zero meson, which means a proton can emit
a pi 0 meson and remain the same nucleon, because charge conservation rule must be fulfilled. So in this case, the emitted pi 0 meson can be absorbed by another proton which is situated near to the previous nucleon proton. Similarly, this is the case for neutron, second case of third one. So the exchange theory of Meson particles can explain the presence of repulsive force at comparatively very short distance and attractive force at short distance in the nucleus. Here is the attractive force at the short distance in the nucleus, which is the nuclear force. So the theory of exchange of pions can explain fully the nuclear force. This is the Meson theory of nuclear force. Now we want to estimate the mass of Meson particles, the mass of pion particles. To this, we know the Heisenberg uncertainty principle. Delta E delta T is equals to H cross. Here delta E is the uncertainty in energy and delta T is uncertainty in time. This is the equation first. We know that the range of nuclear force is about 1.7 10 to the power minus 15 meter. If the velocity of pion exchanging between the nucleons is equal to that of light c, then time taken by the pion in exchange between the nucleons, यानी एक न्यूक्लियन के द्वारा जब कोई पायोन इमिट होता है, उसका दूसरे न्यूक्लियन के द्वारा एब्जॉर्प्शन में कितना टाइम लगता है. दिस इज द डेल्टा टी एंड इट कैन बी रिटन एज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2. डेल्टा टी इज इक्वल्स टू आर अपॉन सी. हेयर सी इज द velocity of light, which is considered as the velocity of pions. Now assuming uncertainty in energy due to pion exchange equivalent to mass energy relation, mass energy of the pions. So equation according to this one, equation third can be written delta E is equals to m pi c square. Now putting equation 2 and 3 in equation first, we got the next step m pi c square rc is equals to h cross. Here h cross is Planck constant. M pi can be written as h cross upon rc. H is Planck constant, which is known 1.05 into 10 to the power minus 34 joule second, and c is the velocity of light, well known. M pi, putting these values in above equation, we can finally find the value of m pi 2.06 into 10 to the power minus 28. If we convert it into the mass of electron, then we must divide it by the mass of electron, which is equals to 9.1 10 to the power minus 31 kg. Now we can finally find m pi is equals to 226 me, which means the mass of pion is 226 times higher than that of electron, which means this is heavier than electron. Thank you.